Okay, दीपिका पाडुकोन को प्लीज वेलकम करें आप. Deepika, you have come for the forget how many times you've come, but first thing is कि तुम शादी के बाद पहली बार आई हो. Please. Congratulations. बुलावा नहीं आया बहन, मैं तो मेहंदी पहनकर बैठी हुई. ठीक है, अभी बुलाएंगी तभी बुलाएंगी. Also, when you came in, you said everyone asks you about Ranveer, but I want to tell you कि हाँ, हमने रणवीर से आपके बारे में पूछा था और एक छोटे बच्चे ने सवाल पूछा था बिकॉज व्हाट वी कांट आस्क लिटिल किड्स आस्क बट वी आस्क कन्वीनियंट. हमने पूछा था, उस बच्चे ने पूछा था कि भाभी को कैसे पटाया. दिस वाज अ बॉय फ्रॉम धारावी. डू यू वांट टू हियर द आंसर? यस. रणवीर सिंह. बहुत टाइम लग गया भाभी को पटाने में. 6 साल से फील्डिंग करके बैठा था, सिली पॉइंट पे कैच पकड़ा है घप करके और मस्त रसम राइस बना के खिलाती है ना अपने को तुम्हारी भाभी. 100% उसने ऐसे ही बोला होगा. गली बॉय प्रमोट कर रहा था क्या? हाँ, वेरी गुड. Look at the way he has gotoed it. I just want to ask. आपका नाम क्या है? अजीम. अजीम, yeah. So I just want to ask कि आप रसम राइस बना के खिलाती है. What does Ranveer do that is so special for you that you would like to mention? वो इतना सब कुछ करता है यार मेरे लिए. अभी क्या बताऊं? Come on. दुल्हनिया. ही इज वेरी सपोर्टिव. और एक पल था जहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे कमाती थी, मैं ज़्यादा सक्सेसफुल थी, एंड दिस वाज आईड से मे बी 3-4 years ago. And I think the fact that he has always supported, he's always been very confident and comfortable with it. और उन्होंने कभी मेरे जो प्रोफेशनल चॉइसेस है उस चीज़ को कभी क्वेश्चन नहीं किया है. he's been extremely supportive, and for someone like me who's I've always been very independent financially and otherwise, ये सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. And most importantly I think the respect, I feel like there's a lot of respect. So yeah. All right, we love Ranveer, yeah. And also all that नौटंकी वो घर पे भी वैसा है क्या? This is exactly the question I wanted to ask you. आपका एनर्जी ऐसा ही है क्या घर पे? Yeah. Oh, अच्छा. So then I'm guessing no, he's not exactly like this. He's not like this all the time. Okay. I mean, there's different sides and different facets to him. He's not like this all the time, but public में, he's very very energetic. Flamboyant. Does he have very colorful shots at home? Sorry, just that last question. I'm sorry, I made images in front of your eyes. I can see. Like shots, why? Meghna, thank you very much for being with us in the studio. And Meghna scandalous. Like, where have I come? No, I had other kind of images going on in my head, but see, like what? Moving like on. What? Like what? Like what, Meghna? You're also just like maybe nothing at all. Yeah. But you've met Ranveer and her together. Obviously, he's shown up at all the promotions and all that. You think Excuse me, what do you mean shown up at all the promotions means what? Almost all. मेरे birthday जन्मदिन पे आया था बस उतना ही. That's it actually. He's come at key points. I mean that's where the support really matters. Like he came, and surprisingly he and my husband landed up almost on the same day in Delhi to surprise us. So cute. It was I think in the middle of our schedule and it was things were getting tough, and you always reach a stage in a film where you just got to find that energy from somewhere and just got to keep at it, and they just arrived in that moment. Jiju, you're damn cute. Jijus, both the Jijus. Thank you, Jijus. I'm so glad you have supportive men, but आप जैसे ladies को मतलब you of course draw a lot. मांगता है, चाहिए तो चाहिए. But you of course are very strong within yourselves. I have a question for both of you. Deepika, from where you've done all sorts of roles and you're doing things that are so amazingly different. You're standing up, you're being seen, चाहे वो depression हो, चाहे वो छपाक जैसी फिल्म हो, and that too at a peak where we've seen you at your most gorgeous looking. And from that to do something like this, some would also say कि I'm speaking in English a lot, forgive me, but please answer in Hindi. I know. Because I'm thought formation in English. But for you to go from there to that, what is your thought process? Role कैसे select करती हो? और ये वन इन पर्टिकुलर ऑब्वियसली मैं बस इंस्टिंक्टिवली चूज करती हूँ. मैं
मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में मैं सोचती नहीं हूँ. जब भी मैं एक नरेशन में बैठती हूँ तो इंस्टिंक्टली जो मुझे लगता है, जो मैं महसूस करती हूँ, मैं उसी वक्त कहीं ना कहीं मैं डिसाइड कर ही लेती हूँ कि मुझे वो फिल्म करनी है या नहीं करनी है. अभी ये अलग बात है कि ज़्यादातर मैं 1-2 दिन का वक्त मैं लेके, मैं सोच के फिर मैं जवाब देती हूँ. बहुत कम ऐसे होता है, जैसे छपाक के साथ हुआ, पीकू के साथ भी यही हुआ था, वेयर इंस्टेंटली मैंने हाँ कह दिया. ये बहुत कम होता है. यूजुअली वेदर आई लाइक इट और नॉट, मैं थोड़ा मतलब सोच के ही मैं जवाब देती हूँ. और मैं ज़्यादा इन चीज़ों को मैं एनालाइज नहीं करती हूँ. मैंने हमेशा इस प्रोसेस को बहुत ही ऑर्गेनिक रखा है, बहुत ही ऑनेस्ट रखा है. तो बहुत लोग पूछते हैं कि यू नो हाउ डू यू चूज़ योर फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक एक्चुअली दैट प्रोसेस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, इफ आई मे से. I think the narration, because that's where it all begins. That's where you're making your career choices. So definitely, you know, I think that the narration stage, when you're hearing stories, is the most important stage, because you're saying yes to things, you're saying no to things also, and you're always wondering whether you've made the right decision or not, and whether it plays out in the same way. और इस फिल्म में what exactly ने कहा कि नहीं ये करना चाहिए अपने को, ग्लैमर नहीं है इसमें, ये नहीं है स्टोरी, because this film is not about your looks at all. It is you get the character right, you put it out there, that's it. It's your acting, it's what you can bring. It's of course what the I won't say it's not about the look. I would just say कि मैंने कुछ अलग किया है. फ़र्क सिर्फ ये है कि लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके के रोल्स में उन्होंने देखा है, एंड दिस वाज डिफरेंट. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बदसूरत था या ये अनग्लैमरस था. ये मेरे हिसाब से लक्ष्मी भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ग्लैमरस है. सिर्फ हमने so it's just that you know we've not seen it, you know. But coming back to Meghna, ये story acid attacks, why, क्यों, और दीपिका क्यों? Because they happen so much, and it's as horrific and as violent as rape, but there is no discourse. नहीं होती चर्चा उसके बारे में, और होनी चाहिए. एसिड बिकता नहीं तो फिकता नहीं. That was one of your lines जो मैंने कल, apart from the crying and all of that, I was like I have to, so that's what I tweeted. मैंने इंटरवल के वक्त ही ट्वीट कर दिया. Tell me about, what has your research shown you about this damn thing? Why is it being sold? Also at the end of your movie it said कि दिसंबर में एक एसिड अटैक हुआ था. 10th January को एक और हुआ. And these are the reported cases. There are obviously a lot of unreported cases as well. But I think फिल्म के थ्रू जो हम देखते हैं वो ये है कि you know लक्ष्मी of course fought for the ban of acid. Eventually वो ban नहीं हुआ, वो regulate हुआ. But I think फ़र्क ये है कि जो लॉ पास हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं there's a gap or a lag, क्योंकि अभी भी एसिड बिकता है. Although even though they sell it, there are regulations, there are strict regulations to it, and without an ID you're not supposed to, you cannot sell acid or you cannot buy acid without showing an ID. But there's no but to this. मतलब फिर भी होता है. फिर भी होता है. बजाते रहो.